So I believe we should start with whoever is here. हाँ. चलो start करते हैं. Okay, fine. Hello everybody. For all those who know me, Ghost and me, welcome to Forever India Roleplay. All right. Uh, I believe we have a PTS channel that will be open, and the staff will be looking at it, and the developer. All right, X Dave, he's going to address whatever questions you have. All right, I'm here to make the introduction. So without further ado, let's start. Okay, we are also addressed, as you know, as FIRP. This community has been existing prior to this restart. All right, all empowered to work under FIRP is also addressed as Team Forever Tactics. Okay, otherwise called TFT, and they've taken really immense effort and put in persistent hours to have the server ready for launch. Where the server side is concerned, there is a lot of activities available to perform based on your character development that arise in numerous amounts of career paths. So, in order to ensure you're on the right track, you're given a guide that helps get you to your next goal. All right. The server is built on a perspective scope towards uniqueness that enriches and enhances your role play skills. All right. We all know that we've played in multiple servers, so I am not going to say much about it. So whether with you are with your friends or without your friends, there is always something to do, and we've made sure that is available in the server. All right. The server is designed to eliminate grind, okay, and create more room for role play. So I hope you understand this very well. Coming from my background as well, it's something I don't appreciate. Okay, I want people to have their life, but if you want love enjoying role play, it is quite the addiction, like a lot of big streamers say. Yes, it is, but we also ask of you to have some family time as well. Okay, have some social life. We have moderators and admins spread around the city, okay, that will be overlooking every aspect of the gameplay being performed. So let's keep it short. Let's talk about our expectations, what we expect from you as a player and a user in this 5M server. A good, healthy roleplay to be enacted, no matter the aggression based on your character, which has to stay within the boundaries of roleplay, with no room for a toxic environment. I think this is very clear and very understood. तुम्हारा बंदा अग्रेशन वाला बंदा है जो गली वली से उठ के आया है, नो प्रॉब्लम. But the minute you interact with the environment like other people, so make sure you're within your boundaries, not going overboard. Okay, we cannot stress enough on this subject as it can envelop us into a void of topics. But I believe as experienced role players, you understand this. All those in this server either know each other, hate each other, or are friends and family. Hence, with this in mind, there is no need to try hard or being unsupportive just because you need a W. ये बात थोड़ा ध्यान में रखना. We are all experienced. I'm not insulting anybody. I'm just making a statement. We ask you to be supportive and cooperative during roleplay that supports both sides. Take a moment to understand that with all the knowledge of the map and the buildings and the interactions to game mechanics, we are well aware of how to overtake it. But with a server fresh start, like today, we ask you to be genuine with your interactions and mechanics. Although we are able to trace mechanics abused, it's best to report it for the reward rather than to face a public penalty, which may lead towards demoralization, even though that's not our goal. All right? So be upfront with it. When it comes to tickets, interactions with our staff, we ask you to be patient and polite. All right? And you should expect the same from them as well. We strongly urge you to report any unintended behavior from our staff that will be dealt strictly. I will look over this matter. All right. So the game is created to build yourself a path towards your career that tells your story.
ओके, सबका स्टार्ट होता है ना, वो तुम्हारा पाथ बिल्डिंग से स्टार्ट होता है। कहाँ से तुमको क्या बनना है वो तुम्हारे ऊपर है। Alright, you just can't enter the server first day and say I am gang, I am business owner. You have to build yourself towards that, and that's the reason we have a path skill tree that is available in game that you can explore and see and make a choice of where you want to go. All right, even though you are availed a chance to change your path at your given loss at any time, there is no problem. You can change, you can have multiple paths, but your time, you lose your time on it, and people will progress further. All right, so there is everything in every job. I mean, there's specific things in every job. Let me correct myself. There is info to everything before you begin your path, so we suggest that you choose very wisely. This I'm highlighting this very important for you to understand. So all those who think that they want to start a business, as I told you, accordingly, make sure it is matching your path that enables you to open a business. Don't go working in garbage or say lumber, and you're coming to me and saying मैं खाने का business खोलेगा, वो चलेगा नहीं. All right, we will be watching everything, we can track everything. So make sure you're working as per your skill tree that is taking you there. This gives enough room for you to be creative in whatever way you want. All right, for those for those that are intending on gangs and organizations, especially for gangs, we have Elosa Devil. He will speak to the members after you guys fill the form, which will be released soon after this conversation. All right. So for gangs, bhai, wearing bandana or same color outfit or even being unnecessary gangster with no ability to prove will be dealt with seriously. So please, if you want to act gangster and all, make sure you are doing it accordingly, appropriately, and by the vote of other people. Okay, don't उठ के मत बोलना हम गैंग है. Okay, हमारा गैंग है, ये हमारा हुड है. कुछ नहीं तुम्हारा है. You have to own it. The way you have to own it, you have to work for it. That people themselves will start talking. So find a way to claim yourself as a gangster by the community and select the members that require as an inauguration process to establish yourself as a gang. Create a system of way. This is just a pointer I'm giving you. Off the topic, eventually ending up in cases. All right, this is from my side. I please implore all of you guys. I would like to make it very clear that it is a roleplay server and not Rocket League qualifications. All right, and this applies to both police and crims. Keep it clean and healthy because there will be no room for excuses. जैसा गाड़ी टक्कर वक्कर फुकट में करने जाएगा ना, हम सीधा उसको भाग उठा के बात करेंगे. All right, let's try to create a healthy server, and it all depends on each and every one of you. For civilians also, aiming to become criminals, we ask you not to ask about illegal locations as a public inquiry. तुमको समझ में आ रहा है? Please do not go asking भाई चॉप शॉप का लोकेशन कहाँ है, भाई वीड कहाँ बेचते हैं, भाई कॉन्टैक्ट कहाँ है. Your life is your secret. Okay, you will only tell it to the people you know who will be part of your group. There is no need to open up because you will lose progress over it. That's how you create your monopoly. Okay, for the police that will be employed in the service, okay, we ask not to try hard, pitting, or desperation for a win. We are all friends. Okay, we are a community. We are there to enjoy, create content. ओके, दोनों साइड एक आध बार तो डब्ल्यू आने वाला ही है, बट टू ट्राई हार्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ही देता हूँ. इफ अ क्रिमिनल वांट्स टू सर्वाइव, उसको तो जेल नहीं जाना है, तो कुछ भी करके वो ब्रिज से उड़ी मारेगा गाड़ी लेके. पुलिस वाला तो अपना जान बच रहा है, राइट? तो वो क्यों गाड़ी उठाएगा? Are you guys understanding? I hope you guys understand. I'm sorry, my Hindi is really bad, but I hope you understand. You guys will get used to me for those who don't know me.
Okay, last but not least, on the topic of colorful, highlighted, educated words that brings our mother, father, brother, sister, and some out of this world that should not be heard. Okay, this is a plea to all of you. Be minimum with such words and make sure it's never used in the most serious situations. As a character, being abusive is accepted, but only with yourself and your team or your gang or your friends around you. Never direct words at another person to initiate a conflict for no reason. Should it arise, you will be held accountable publicly. Please, mat karo. I think you guys already know this part. Tilt sabko hota hai. Okay. Yeah, let's talk about tilt also. Do not try to tilt or provoke the person कि भाई वो गाली गलौज चालू करना. वो भाई वो जरा भी मत करना. Please. All right. Uh, on the side of things, besides the role playing side, to enhance the community, we are introducing an established apparel brand, hashware.in, for which we are associating with to take things into reality, where all clothings purchased off season, they will all have a redeem code that you can use that we will release to the server. All right, and that can be purchased um, through their e-commerce webpage. Okay, so you can create your custom brands, you can have what's available on their page, you can avail this discount. All right, it is good, so we can take it into our social lives as well. We ask you to enjoy, have a good time, make friends, create memories. You are the example we strive to develop furthermore as a team. So it's up to you. So be the motivation to others and let us create a great community together. All right. For your side of expectations, whatever the PTS are, Dave here will address you. So without further ado, any further details will be spoken by ex Dave. Thank you. थैंक यू क्वेश्चन मी. सो गाइस, कैसे हो सब? पहले ये बताओ. सब बताओ बीटीएस में कैसे हो सब? अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. और एक्साइटेड हो 2.0 के लिए? सो हाँ, देखो यार, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, सिंपल वैसे बात करते हैं. रही बात रिगार्डिंग सर्वर रिलेटेड, आप सबको पता ही है 1.0 की तरह इस बार भी सर्वर वैसे ही बहुत ऑप्टिमाइज्ड रहेगा फॉर लो एंड. स्पेशली लो एंड वाले आराम से खेल सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं आएगी किसी चीज़ में. एंड अपनी रही आरपी वाइज चीज़ें, तो इस बार बिल्कुल ही सिनेरियो ही पूरा अलग बदल चुका है. वो पुरानी चीज़ें नहीं होंगी, लाइक होता है ना कि सेम रैंडम जॉब्स हो गई एंड ऑल. इस बार पूरा अलग है. आप इन सिटी जाओगे आपको दिखेगा वो चीज़. तो हाँ, मज़ा आने वाला है इस बार ही. वैसा कुछ होगा नहीं. एंड पीडी के बारे में लूनाटिक बता देंगे. लूना. हम्म पीडी का थोड़ा बता दो. तो बेसिकली जैसे लाइक जो 1.0 में थे, 1.0 में थे तो फिर पीडी का सीन वही रहेगा. 1.0 में जो ऑफिसर थे वो उनको डायरेक्टली लाइक ये किया जाएगा. जो नए ऑफिसर जिनको रिक्रूटमेंट होना है उनके लिए फॉर्म खुल जाएगा. फॉर्म खुलने के बाद दे कैन फिल द फॉर्म, आके पीडी में इंटरव्यू दे सकते हैं. एंड रही बात जो पुराने बंदों की, उनको भी सेम एक फॉर्म भरना पड़ेगा. उनका फॉर्म फिलअप होने के बाद उनका रिस्पॉन्स आ जाएगा जो लाइक ऑफिसर 1.0 में थे. एंड रही पीडी की बात, तो लाइक एवरीवन नो पीडी प्लेज अ मेजर रोल इन द सिटीज. लाइक अगर पीडी नहीं रही तो लोगों को मजा ही नहीं आएगा. मतलब लाइक आरपी फर्दर ये नहीं होगी. तो पीडी एंड गैंग इज लाइक फेस, मतलब एक बोलते हैं ना कॉइन है. इट इज अ फेस ऑफ ए कॉइन.
एक साइड होते गैंग, एक साइड होती पीडी। लाइक बेसिकली वही होती है, एक का बैलेंस बिगड़ता है तो दूसरे का बैलेंस बिगड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि इस साल 2.0 में जो क्या उसको बोलते हैं, एक क्या? मिनट, आरपी एक्सपीरियंस? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। जब तक लूना भाई पानी पीते हैं, तब तक मैं बता देता हूँ। बेसिकली जितना भी पीडी का लास्ट टाइम जो भी था, जो गैंग्स वालों को कंप्लेन थी कि भाई पीडी ज़्यादा ओवर पावर्ड है, पीडी में बंदे बहुत ज़्यादा है, पीडी रूल एनफोर्स बहुत ज़्यादा कर रही है, वो सब नहीं होगा। सॉरी, मेरे को एक कॉल आ गया था वैसे तो। हाँ, आदि हाँ कंटिन्यू कर या फिर मैं बोलूँ? हाँ, बोल 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 बोल। हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा था, लास्ट टाइम जैसे थोड़े बहुत फकअप्स होते हैं जहां तक मुझे लगता है। तो ये मतलब मेरी तरफ से ये है, एंड बाकी ऑफिसर मैं चाहता हूँ कि इस बार ना हो। इस बार लाइक सबको एक प्रॉपर आरपी मिले, लाइक फ्रॉम गैंग, मतलब एक ऑफिसर को भी, एक गैंग मेंबर को भी, एंड एज वेल एज सिविलियंस एंड डिफरेंट मेंबर्स जो डिफरेंट वाइट लिस्ट जॉब एंड ये करेंगे। तो बस मेरे तरफ से इतना ही। चलो ठीक है। सो बेसिकली पीडी की साइड से भी कोई आरपी रेस्ट्रिक्शन होंगे नहीं। अगर पीडी वालों को कुछ आरपी करनी है तो पीडी की साइड से भी आरपी रेस्ट्रिक्ट नहीं होगी, क्रिम वालों की भी नहीं होगी। एंड जो नॉर्मल सिविलियन आरपी करना है उनके लिए भी वास्ट आरपी एक्सपीरियंस है। दो तीन जॉब तो ऐसी है जो आई गेस अभी मेरे हिसाब से करंटली इंडिया के तो कोई सर्वर में है नहीं। करंटली जितने चल रहे वाइट लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट इंक्लूडेड, जो सिविलियन एक्सपेंशन में हमने स्टार्टिंग में यूज़ किए हैं। तो तुम लोगों को सिविलियन आरपी करने में भी मज़ा आएगा। गैंग एंड पीडी आरपी तो तुम लोगों को पता ही है कि अगर एक साइड से अगर कुछ इनिशिएट होगा तो ही दूसरी साइड वाला भी कुछ कर पाएगा, वरना पूरा दिन दोनों के दोनों बोर ही होते रहेंगे। अभी बाकी जो क्रिम साइड की चीज़ें है, टेल अस अबाउट कार। गाड़ियाँ सारी की सारी मोस्टली कस्टम मेडेड है। एंड सारी कोई भी गाड़ी का ऐसा सीन नहीं है कि एक गाड़ी मेटा कार होगी जिससे वही गाड़ी पूरे शहर में दिखेगी, वैसी एक भी कार नहीं है। सारी गाड़ी इक्वली बैलेंस्ड है, हैंडलिंग से लेकर टॉप स्पीड तक। तो कार्स का भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पीडी की गाड़ी भी वैसी ही रहेगी। ठीक है। और सारी गाड़ियाँ जी टी एफ आई के मॉडल्स की हैं, सो किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक का भी इश्यू नहीं होगा स्ट्रीम वगैरह पे। या यार लोअर फ्रेंडली कार्स है आईसी, कोई भी आईआरएल कार्स नहीं है। आईआरएल से मिलती जुलती है बट नॉट आईआरएल, ओनली लोअर फ्रेंडली। प्रीमियम कार्स, यस ऑल कार्स आर प्रीमियम। एफटीपी ड्राइव बाय अभी काफ़ी टाइम है पीजी भाई, अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं है। सर्वर का प्रोग्रेशन पहुँचेगा वैसे हम आगे पहुँच जाएंगे। ठीक है। Anyone has any else question? D-badge vehicles, no रौनक, D-badge vehicle won't be used as I think कि उस पर भी स्ट्राइक पड़ती है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो यूज़ होंगे। ओरिजिनल GTA कार्स ही होगी आईसी, ओनली ओरिजिनल GTA 5 कार्स, नो डी-बैज्ड vehicles। Depend if the model is a... डी Nah, बैज्ड still we व्हीकल्स भी don't लो wanna फ्रेंडली take नहीं the होती। chance। रेसिंग ला देना जल्दी, रेसिंग टाइम ला के साथ देना में होती जल्दी ओ। अरे एवरीथिंग तुम्हारे ही हाथ में है, मैं जितने भी प्लेयर है सिविलियन साइड तुम्हारे ही हाथ में है कि क्या चीज़ कितनी जल्दी आएगी है। या क्या चीज़ कितनी लेट आएगी। जैसे गोस्टिन में भाई ने ऑलरेडी बताया था कि स्किल ट्री है सर में, और स्किल ट्री से जैसे ही कुछ चीज़ कुछ होगी, कुछ चीज़ हम पे आएगी तो कुछ चीज़ आपके पास भी पहुंच जाएगी। मैं ज़्यादा लीक नहीं कर रहा हूँ, बट जिनको समझना था, जिनको आइडिया है स्किल ट्री के no बारे में, no वो समझ ही गए होंगे। हाँ let बता। them explore. या Let या them दैट्स व्हाट आई एम explore. टेलिंग, या। Let them explore. What about uniqueness? Uniqueness in what terms, Ronak? Character is pretty unique. Ronak, क्या चीज़ के यूनिकनेस के बारे में बात कर रहे हो? If you're talking about MLOs, we have very unique MLOs. कुछ अलग सर्वर में, something that is not in the server. I already told in the start when I started talking के दो तीन ऐसी जॉब्स है जो करंटली इंडिया में कोई भी सर्वर में नहीं है, वाइट लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट इंक्लूडेड।
सिर्फ I would अभी I would एफआईआर I पे would नहीं है। suggest, sorry to interrupt, I would suggest all those who are looking for something uniqueness, it is something that I already mentioned. Please server के अंदर जाओ, एक्सप्लोर करो, चेक करो, काफी कुछ है। इट इज रोल प्ले, नॉट जीटीए ऑनलाइन। ओके, तो ऑलरेडी तुम्हारे हाथ में कुछ पेड़ा नहीं दिया हुआ है, तुमको स्टार्ट करना है तुम्हारा करियर। जैसे कॉलेज करके तुम काम पे चल रहे हो ना, तो वो करियर लेके तुमको चालू करना है। वहां से तुम कैसे जाएंगे वो तुम्हारे ऊपर है, तुमको कितना स्लो जाना है कितना फास्ट जाना है तुम्हारे ऊपर है। और देर इज अ कैप टू हाउ मच यू कैन डू पर डे। मतलब ग्राइंड के बगैर, आफ्टर द ग्राइंड इज ओवर विथ योर वर्क, you have enough time to go and role play and explore with friends. तुम लोग को दरवाजा वरवाजा ढूंढना नहीं है, प्लीज, मैं अभी बोल रहा हूँ। ओके, this may be meta for you guys, sorry ex dev, but please don't go hunting doors। भाई तुमको 4000 दरवाजा में कुछ नहीं मिलने वाला है, उस पे तो है ही नहीं। सो यस, क्रिएटिविटी, एंड यू विल गेट एवरीथिंग अनलॉक्ड योरसेल्फ। इट्स ऑल बेस्ड ऑन व्हाट यू डू इन द सर्वर। प्लीज कंटिन्यू। सो अभी आपको आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा कि एवरी चीज़ तुम लोग के पर ही है कि क्या करना है, कितना सर्वर का प्रोग्रेशन कितना फास्ट है, कितना स्लो है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द प्लेयर बेस एंड द सिविलियंस विच आर प्लेइंग। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है दोनों स्ट्रिपर? हाँ, मैं उसको मेलो दे भाई। दूंगा, उसको चाहिए ना, कितना दूंगा। हाँ, उनको अलग आरपी करनी है। हम्म। Add the baby car. Okay, that is copyrighted. We can't add it. लैंग्वेज ESG, लैंग्वेज ESG language, लैंग्वेज ESG, language a bit. इधर ही चालू Doctor कर रहे Bha. पब्लिक। If anyone has any more questions, please write it. कोई भी चीज से लेकर क्वेश्चन जो आई एम रेडी टू आंसर, कोई हाँ, भी ये चीज मैं से ले। हम्म, ईएमएस के हमारे जो वो हैं, जो अभी ईएमएस लीड कर रहे हैं वो अवेलेबल है नहीं, बट पूछो क्वेश्चन, आई कैन आंसर। सर्वर चालू करो अब, थोड़ी देर का वेट कर लो बस, थोड़ी देर में अप हो ही जाएगा सर्वर। एग्रिल्स रहेगी आस्किंग फॉर आईसी। अरे एनी गाइड प्रोटोकॉल इज बुक? हियर। गाइड बुक इज ऑलरेडी देयर इन सर्वर रूल्स, यू कैन चेक इन देयर। एंड बाकी के सर्वर के जो कमांड्स की गाइड होगी वो आज रात तक अपडेट हो जाएगी। जेल के अंदर डीओसी होगा, यस, देयर इज अ डेडिकेटेड डीओसी डिपार्टमेंट फॉर जेल। Anyone interested for EMS? Yes. Adi, who is Ghost is very annoying. I see we know who you are and we know what Ghost is you. So I won't be answering to that. Which graphic mods are allowed? Currently server में pure mode है नहीं और in future भी नहीं होगा pure mode. So you can use whatever graphic mods you want. But if we find any PvP mods, for example confetti, tracers, or something else which has an upper hand on you during fights or anything chases and all, then you will receive a strike point or might be get banned if it's a big offense. आदि वीयू पे आदि एक बंदा सेकंड, एक तूने मिस कर दिया वो ईएमएस कौन वाला सा? जो पूछ रहा था बंदा। हाँ क्या क्या? ईएमएसआरपी होगी